Morning class 5. Take out your social studies book 5. Open the page number 1, unit 1, the earth and the environment. The subtopic of this chapter is looking at regions. In this chapter, we can study about the different physical regions of Pakistan. Let's start the chapter. Anybody knows what is the meaning of the word region? Let me tell you. The meaning of the word region is a state, a sector, a zone, a territory, जिसे हम बहुत आसान ज़बान में कह सकते हैं खित्ता, इलाका, रियासत, ज़मीन का कोई हिस्सा. Pakistan can be divided into the 5 physical regions. Number 1, mountains in northern areas, plateaus, Potroha Plateau, desert in Sindh and Balochistan, Thar और Cholistan desert. Plain areas या plain regions and deltas, the coastal area of Sindh. Each of these regions has particular characteristics which affect the lifestyle, occupation and living conditions of people. People living in similar physical regions of other countries are found to have much in common with Pakistanis. Do you know why these regions are important for us? Now close your eyes and imagine a completely flat world. Now tell me what you imagined. A flat land with no mountains, no snow, no river. Will there be rain? No. The answer is no. How would the crops grow? जब हमारे पास दरिया नहीं होंगे, हमारे पास समंदर नहीं होगा, हमारे पास उसको चलाने का एक पूरा सिस्टम नहीं होगा, तो किस तरह से बारिशें हो सकेंगी? और जब बारिशें नहीं होंगी, क्या हम फसलें उगा सकते हैं? क्या हमारी ज़मीन पे हरियाली हो सकती है? Never. No. Earth is the most beautiful planet. It's perfect in all aspects and is the only one where life exists. ज़मीन वो वाहिद हिस्सा है पूरी कायनात का, या पूरे हम कह लीजिए जो पूरे सोलर सिस्टम है हमारा. अर्थ वो वाहिद सैयारा है जहाँ पे ज़िंदगी के असरात मौजूद हैं, जहाँ पे इंसान मौजूद हैं, जहाँ पे ज़िंदगी है. ज़मीन के अलावा, अर्थ के अलावा हमें अपने पूरे सोलर सिस्टम में कहीं भी किसी किस्म की ज़िंदगी के या इंसानों के किसी भी लिविंग थिंग के कोई असरात नहीं मिलते. क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे रीजन को या हमारे खत्ते को या हमारी ज़मीन को जो है वो बहुत नवाजा है. मुख्तलिफ़ रीजन से, मुख्तलिफ़ जो हैं वो मौसमों से, मुख्तलिफ़ क्लाइमेट से, मुख्तलिफ़ वेदर कंडीशन से, जिससे हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारी लिविंग कंडीशंस पे, जिस तरह से हम रहते हैं उन सब पे असर पड़ता है. कैसे पड़ता है ये चैप्टर में हम. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट द कॉपी वर्क. फर्स्ट ऑफ ऑल you can make the title page of unit 1, the earth and the environment, looking at the region. Now on the next page
You can write the date first, draw margin line, and copy down the question number 2. List the different regions of Pakistan based on physical characteristics, and for each of them name a similar region in a different part of the world. Now draw margin in the center of the page. In first column, write region of Pakistan, and second, similar region in the world. You can copy down the answer as it is in your copies or in your journals. Now, question number 2. First of all, you can write the heading short question answer and copy down the question number 1. What is a region? The answer is, a region is a larger area which is characterized by a common physical or climatic feature, a mountainous region or a hot climatic region. That's all for today. Thank you so much.